नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये न्यूज़ आइटम आपने अभी हाल ही में पढ़ी होंगी कि पत्नी के प्रेमी के मोबाइल का रिकॉर्ड मांगना निष्ठा का हनन जो है, ये जो है एक ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये चीज़ जो है कहा है कि ये एक राइट टू प्राइवेसी है, तो इसलिए वो नहीं दिया जा सकता है। ये लोअर कोर्ट ने कहा था कि दिया जाएगा। तो क्या है ये जजमेंट, मैं आपको ले चलता हूँ इस जजमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फीडबैक देते रहे और अपना सहयोग और सपोर्ट इस तरह से देते रहे और मुझे गाइड भी करते रहे कि मुझे और किन किन विषयों पे जो है आगे इस तरह से जो है बनानी चाहिए वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि सर्च करके उस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो बने रहिए टिल एंड, और इसके एंड में मैं आपको ये जो जजमेंट है, मैं पूरी जजमेंट आपको दिखाता हूँ। तो ये जो जजमेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें जो लीव था मेन मांगा हुआ, दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, praying to set aside the order dated 23rd February 2019 on IA number 8 in so and so. तो इसमें जो मेन चैलेंज था वो था, the petitioner is before this court calling in question order dated 23rd February 2019 passed by the additional principal judge family court Bangalore in so and so, whereby the court permits summoning of mobile tower record details of the mobile number of the petitioner. तो जो इसमें बेसिक फैक्ट्स थे वो ऐसे है, the first respondent and second respondent are wife and husband. After their marriage, the relationship turning sour, the wife files a petition before the family court seeking annulment of the marriage with the second respondent on account of cruelty. In the said proceeding, the husband files an application seeking call record details of the wife and her alleged paramour, which the court allows by an order dated 24 November 2018. और यही ऑर्डर जो है इसमें चला था इस रिट पिटीशन में बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसमें जो आर्ग्यूमेंट थी, जो उसके पैरामूर की तरफ से थी, जो उसके एलाइड लवर की तरफ से, वो ये था कि द लर्नर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटीशनर वुड कंटेंड विद वेहेमेंस दैट ही इज ए थर्ड पार्टी to the proceedings and his call record details or tower details, which is one and the same, is directed to be produced by the court through the manager of mobile operator. It violates his right to privacy as not being a party to the proceedings. His call records details cannot be sought to be summoned by the husband. जो इसमें कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था पैरा 7 में, वो ये था कि देयर आर 3 प्रोटैगोनिस्ट टू द लिस्ट, वन द हस्बैंड, other wife and third the petitioner, alleged paramour of the wife. The husband and the wife have dispute between them, and the wife alleging cruelty by the husband has preferred a matrimonial case. The narration in the petition seeks annulment of marriage is to certain allegation against the husband. तो जो इसमें जो मेन इशू जो ऑनरेबल कोर्ट के पास डिसीजन के लिए था, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, वो ये था, द इशू वुड नाउ बी वेदर द ऑर्डर वुड वायलेट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पिटिशनर. As stated earlier, the petitioner is not a party to the proceedings. The allegation of the husband is that the wife has illicit relationship with the petitioner. The petition for divorce is not filed by the husband. It is wife who initiates मैट्रिमोनियल केस नंबर सो एंड सो अगेंस्ट द हस्बैंड सीकिंग annulment ऑफ द मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुअल्टी. तो जो ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है इसमें इंटेंशन ऑफ हस्बैंड के बारे में, वो ये है पैरा 9 में, द सबमिशन ऑफ द लर्नर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द सेकंड रिस्पोंडेंट इज दैट ही वांट्स हिज वाइफ, देयर इज ए चाइल्ड बोर्न फ्रॉम द वेडलॉक एंड चाइल्ड्स फ्यूचर इज इन jeopardy due to the act of the wife in having relationship with the petitioner. If this was the intention of the husband, he would not have waited for 4 long years as on date in preferring a petition seeking restitution of conjugal rights. He wants to file a matrimonial case instituted by the wife for divorce and does not want to file a case for restitution of conjugal rights. Therefore, the intention of the husband is only to prove alleged adultery on the part of the wife, for which reason the tower details of the third party cannot be permitted to be divulged. It would undoubtedly violate the right to privacy of the petitioner, who is not a party, who is not put on notice, and whose defense is not permitted to be projected. Even therefore, permitting tower details of the petitioner would be contrary to law without him being in the know of any proceedings between the husband and wife, but only on the allegation of the husband that the wife is in illicit relationship with the petitioner.
तो ये जो है इसमें जो है इंटेंशन जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था। और इसमें जो है पैरा 11 में जो कहा है, इन द केस एट हैंड टवर डिटेल्स ऑफ द पिटिशन इज परमिटेड टू बी टेकन एंड प्रोड्यूस्ड, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम the petitioner comes into the picture merely on the allegation of illicit relationship. He is a third party to these proceedings. Third party's privacy cannot be permitted to be violated on the specious plea of the husband that he wants to prove illicit relationship between the petitioner and the wife. It is right that right to privacy is implicit in the right to life and liberty granted to the citizens of country under Article 21 of the Constitution in India. It is right to be let alone. A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, and other incidental relationships. Informational privacy also forms an integral part of the right to privacy. Therefore, in order which directs toward details of the petition to be placed before the court in the proceeding, which is not even a party, undoubtedly violates informational privacy. और फिर जो है इसमें जो डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट का जो पैरा 12 में है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर बाय द वाइफ by not challenging it as of now would have no bearing on the right of the petitioner to seek quashment of the said order insofar as it concerns him, as he is a third party wife who is anyway party to the proceeding has instituted a divorce case. Her acceptance or otherwise cannot bind the petitioner. There is no warrant to permit tower details of the petitioner to be summoned abroad before the concerned court to aid the plea of the husband who has not even filed any case. और अल्टीमेटली जो है द ऑर्डर जो जिस ऑर्डर से वो समन किया गया था रिकॉर्ड, उसको जो है क्रैश कर दिया गया और ये पिटीशन जो है अलाउ होगी। तो ये कौन सी है ये पिटीशन, मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो है इन दी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एट बेंगलुरु है और ये 30 नवंबर 2022 का लास्ट ईयर का है। और ये जजमेंट इज बाय द ऑनरेबल जस्टिस एम नागारा प्रसन्ना, रिट पिटीशन नंबर सो एंड सो। और इसमें पार्टी का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि पार्टी का नाम जो है इसमें कंसीडर किया गया है, तो क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। तो ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल होने वाली है, काफ़ी काम आने वाली है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के। तो आई होप कि आप लोग जो है इसको लिंक को जो है शेयर करें और सेव करें अपने पास। और मैं भी अपनी जो प्ले लिस्ट है जो डाइजेस्ट का काम सर्व करती है उसमें इसको ऐड कर दूंगा मैट्रिमोनियल वाले केस में और डाइवोर्स वाले केस में, ताकि आप लोगों को सर्च करने के लिए इजी रहे। काइंडली कमेंट्स देते रहें और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।